Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, friends and listeners. Today we are going to understand electorate and what is universal adult franchise and restricted franchise. Moreover, I am going to explain the basic difference between universal adult franchise and restricted franchise. What is electorate? Electorate means voter. Keep remember that electorate means voter. Electorate doesn't mean that every person living in a particular territory, living in a particular state holds the right to vote. हर वो शख्स जो कि एक रियासत का बाशिंदा है उसे हम वोटर नहीं कहेंगे, उसे हम इलेक्टोरेट नहीं कहेंगे. जब भी हम टर्म इलेक्टोरेट यूज़ करेंगे इट मीन्स कि हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास वोट देने का इख्तियार है, जिनके पास वोट देने का हक मौजूद है. अब वोट देने का हक किस बुनियाद पर मिलेगा ये हम आगे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इस टर्म को अंडरस्टैंड करना है इलेक्टोरेट. तो इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? वोटर. और आपने ये भी याद रखना है कि एक स्टेट की, एक रियासत की जो मुकम्मल आबादी है, जो उसकी कंप्लीट पॉपुलेशन है, उसके पास इस बात का इख्तियार नहीं है, दे डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल मैटर्स, इन डिफरेंट पॉलिटिकल अफेयर्स. इट मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, ओनली दैट पार्ट इज एनफ्रेंचाइज्ड. इट मीन्स कि सिर्फ उसी पार्ट को वोट देने का हक हासिल है. और जब भी हमने इलेक्टोरेट की टर्म यूज़ करनी है तो इट मीन्स कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन. जो सिटीजन्स हैं जिनके पास राइट टू वोट है, जिनको हम इलेक्टोरेट कह रहे हैं, जिनको हम वोटर कह रहे हैं, उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने वोट के ज़रिए से एक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया. सो यू कैन से कि जो रोल है इलेक्टोरेट का इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, बल्कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेशन. कानून साजी में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स. फॉर एग्जांपल अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे रेफरेंडम और इनिशिएटिव, ये दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से वोटर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स, इन डिफरेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस. इसी तरह से दुनिया में कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स भी मौजूद हैं जहाँ पे वोटर आर एलिजिबल एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इलेक्ट सिविल सर्वेंट्स एंड टू रिमूव देम. और उनको इलेक्ट करना और उनको जो रिमूव करने का प्रोसेस है जिसको रिकॉल का नाम दिया गया है, और यूएस में रिकॉल प्रैक्टिस इज़ वेरी कॉमन. सो इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि जो वोटर है उसका काम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि ऐसी स्टेट्स जहाँ पे अप टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, वहाँ पे जो वोटर्स हैं दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स. हमने पहले बात की थी कि इलेक्टोरेट या वोटर उनको किस बुनियाद पे वोट देने का हक हासिल होता है. तो अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जस्ट आप इस टर्म पे फोकस करें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. जिस तरह से हमने इलेक्टोरेट टर्म को अंडरस्टैंड किया कि इलेक्टोरेट मीन्स वोटर, इसी तरह से आपने फ्रेंचाइज टर्म को याद रखना है. फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. अब ये तो हमने याद कर लिया, फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट. उसके बाद चलते हैं एडल्ट की तरफ. एडल्ट मीन्स कि वो शख्स जो बालिग हो चुका है, जो अपनी लीगल एज को पूरा कर चुका है, जो अपनी लीगल एज तक पहुंच चुका है, उसके पास राइट टू वोट है. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट हु इज एडल्ट, दैट एडल्ट हैज़ द राइट टू वोट. और उसके इस राइट टू वोट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ his or her caste, creed, color, religion, ethnicity, education or wealth. तो उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यानी जहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है राइट टू वोट के लिए
کو حاصل کرنے کی، ایک ووٹر کہلانے کی وہ ایج ہے. اور اگر ایک شخص نے اس منیمم ایج کو ریکوائرمنٹ کو میٹ کر لیا ہے، ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن ادر ریکوائرمنٹس لائک اس کو انسین نہیں ہونا چاہیے، اسے پاگل نہیں ہونا چاہیے، بینکرپٹ نہیں ہونا چاہیے، لونیٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں اور وہ اپنی اس منیمم ایج ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے تو دیٹ پرسن از انٹائٹلڈ ٹو رائٹ ٹو ووٹ. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیکاز یو بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر آئیڈینٹی گروپ سو یو آر ایکسکلوڈیڈ اینڈ یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو ووٹ. یو کانٹ سے ان یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز. پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں 2002 سے پہلے جو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کے لیے جو ایج ریکوائرمنٹ تھے دیٹ واز 21 ایئرس. لیکن مشرف پیریڈ میں 21 ایئر سے جو ووٹنگ ایج ہے اس کو ریڈیوس کر دیا گیا اور ایٹ دس مومنٹ پاکستان کے اندر جو ووٹنگ ایج ہے وہ 18 ایئرز ہے. تو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز I think you people got it clear کہ if all the citizens fulfilling minimum age requirement they are given the right to vote without any discrimination on the basis of caste, creed, color, religion, ethnicity etc. تو ہم اسے کیا نام دیکھتے ہیں؟ اسے یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو رائٹ ٹو ووٹ سے ڈپرائیو کیا جائے اینڈ یو کین سے کہ if discrimination is done on the basis of any of the said factors like religion, color, creed, caste, ethnicity, education تو then وہ جو سسٹم ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ریسٹرکٹیڈ فرنچائز. ریسٹرکٹیڈ ورڈ سے ہی آپ کو یاد رہے گا کہ جس میں ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. اب وہ ریسٹرکشن مذہب کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ ریسٹرکشن ایجوکیشن کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، آپ کے پرٹیکولر آئیڈینٹی گروپ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک فیکٹر کو بنیاد بنا کے آپ کو رائٹ ٹو ووٹ سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اٹ مینس کہ دیر از ناٹ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز rather دیر از ریسٹرکٹیڈ فرنچائز. سو وٹ از الیکٹوریٹ؟ الیکٹوریٹ مینس voter and what is meant by franchise? Right to vote. And when every adult has the right to vote it means there is universal adult franchise. And when a person is being deprived on the basis of caste, creed, color, religion, ethnicity, education or wealth, then it is said that there is restricted franchise. There isn't universal adult franchise. Hope you all have understood well about these two terms, electorate and universal adult franchise as well as restricted franchise. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.